डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने इसमें बात की थी ट्राई हेलाइड टेट्रा हेलाइड से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम हेरोइंस हमने स्टडी की थी। हेरोइंस के प्रिपरेशन मेथड्स के बाद में हमने केमिकल रिएक्शंस इसमें पढ़ी थी। हेरोइंस कंप्लीट कर चुके हैं, फ्रीओन्स हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रीओन में कुछ एक टॉपिक इसमें शेष रह गए थे, वो टॉपिक हम इसमें क्लियर करते हैं। फ्रीओन रिएक्शंस होती हैं कि चेन रिएक्शंस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CF3 फ्रीओन 11 नेम है इसका फ्रीओन 11। स्टूडेंट्स, फ्रीओन 11 हम इसमें लेते हैं और फ्रीओन 11 की रिएक्शन करते हैं। ये चेन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि Cl रेडिकल फ्री रह जाता है, ClCl2 एंड Cl रेडिकल। इस प्रकार से Cl रेडिकल बनता है और इसके आगे हम इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाएं तो ओजोन जो गैस होती है, ओजोन गैस के साथ Cl रेडिकल रिएक्ट करता है एंड ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है एंड Cl रेडिकल इसमें होता है। ओजोन रिएक्ट विद Cl रेडिकल एंड Cl रेडिकल फॉर्म एंड ऑक्सीजन एंड दिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है एंड Cl रेडिकल इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं Cl रेडिकल जो है बना था। Cl रेडिकल की रिएक्शन जो होती है वो हम वापस ओजोन के साथ करते हैं, ओजोन गैस के साथ। तो ये Cl रेडिकल ओजोन के वन ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट करता है एंड Cl रेडिकल इसमें फॉर्म हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल्स इसमें बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद में ये टोटल जो रिएक्शंस हमने देखी, इसमें रिएक्शन नंबर फर्स्ट रिएक्शन सेकंड एंड रिएक्शन नंबर थर्ड टोटल चेन रिएक्शंस है। चेन रिएक्शंस कंटिन्यू इसमें जारी रहती हैं और चेन रिएक्शंस के द्वारा हम देखते हैं कि Cl रेडिकल इसमें लास्ट में फॉर्मेशन हो रहा है और इस चेन रिएक्शन में जो Cl बन रहा है वह ओजोन डिप्लेशन के लिए इसमें जिम्मेदार है। ओजोन डिप्लेशन ओजोन को ये चेक कर देता है। ओजोन परत को हम ओजोन लेयर को हम लाइफ सेविंग लेयर भी कहते हैं। इस लाइफ सेविंग लेयर मीन ओजोन लेयर को डिकम्पोज करने के लिए Cl रेडिकल यूज होता है। Cl रेडिकल जो है वह ओजोन लेयर को डिकम्पोज कर देता है इजीली। मीन वन Cl रेडिकल approximate decompose 1 lakh ozone molecules। 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स मीन 1 Cl रेडिकल जो है वो डिकम्पोज कर देता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को। 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल में डिकम्पोज करता है। मीन ओजोन लेयर जो लाइफ सेविंग लेयर होती है उस लाइफ सेविंग लेयर को सबसे ज़्यादा डिकम्पोज करता है, डिप्लेशन करता है Cl रेडिकल जो कि फ्रीओन होता है। तो मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन फ्रीओन की वजह से होता है। और इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें कंप्लीट किया है। ओजोन डिप्लेशन को हमने समझा है। ओजोन डिप्लेशन इसकी वजह से होता है, फ्रीओन लेयर की वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है। और 1 Cl रेडिकल जो होता है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करता है इजीली। इसके बाद हम आगे इसमें स्टडी करेंगे DDT। स्टूडेंट DDT को हम स्टार्ट करते हैं। एक अदर टॉपिक हम लेते हैं DDT। और DDT में हम देखेंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इसका नेम होता है, IUPAC का नेम होता है। हम इसको निकालने इसको हम प्रिपेयर करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। इसकी DDT के यूजेस के बारे में, इनके टॉक्सिक नेचर के बारे में, हार्मफुल नेचर के बारे में बात करेंगे। DDT का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है? वी नो दैट क्लोरल फॉर्मूला इज क्लोरल CCl3Cl2 मीन
chlorine required, and C6H5Cl with chlorobenzene required. Two molecules of chlorobenzene and one molecule of chlorine required in this reaction, formation of DDT. We are taken chlorobenzene, one molecule, Cl in here H. Second molecule of chlorobenzene and react with CCl3CHO CCl3CHO के साथ हम रिएक्ट करते हैं। CCl3CHO के साथ लिक्विड इसमें हम करेंगे, रिएक्ट करेंगे एंड H2O इस रिएक्शन में से रिमूव हम कर देते हैं। H2O remove in this reaction and product is formed DDT. When chlorobenzene react with chloride, trichloroacetaldehyde and DDT dichlorodiphenic trichloroethane will be formed in this reaction. Product is DDT is formed. So dear students, we are taken chlorobenzene 2 molecule and 1 molecule of chlorine and product is formed DDT dichlorodiphenic trichloroethane. Name is IPC name is number 1 and number 2, two atoms of carbon and 2 molecules of benzene and name is phenol and Cl name is chloro, so name is para position and Cl atom and the next Cl add also para position, so para days dichloro para and para days dichloro diphenyl and the total 2 carbon atoms and 3 Cl trichloroethane being DDT. So dear students, DDT का प्रिपरेशन हमने कर लिया है। क्लोरीन की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ एंड DDT का फॉर्मेशन होता है जिसका आईपीसी नेम है पैराडेस डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज BHC, benzene hexachloride. Next topic is, dear students, BHC, benzene hexachloride. BHC benzene hexachloride preparation method.
We have taken benzene and react with 3Cl2 chlorine in the presence of light. In the presence of light, three molecules required Cl2 chlorine gas and benzene, one molecule required in this reaction. We know that three double bond present in benzene ring. Total 3 bonds dissociate by Cl atoms and hydrogen replaced by Cl atom and Cl atom at all positions of benzene. Total 6 carbon and 6 hydrogen present in benzene ring. Total 3 hydrogens replaced by Cl atoms and a product is formed. Product is formed. Dear friends, total 6 chlorine atom present and benzene ring, total 6 carbon and total 6 hydrogen atom present, 3 bond present in benzene ring, total 3 bond dissociated by Cl atoms and add all positions of carbon atom and product is formed BHC benzene hexachloride, name is benzene hexachloride and IUPAC nomenclature, IUPAC name is IUPAC name. IUPAC name is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 carbon atom present, total 6 hydrogen atom present and total 6 chlorine atom present. In IUPAC name is 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachloro cyclohexane. Hexachlorocyclohexane name and other name is hexachlorocyclohexane and other name industrial name is industrial name is 666 because on BHC in BHC total 6 chlorine, 6 hydrogen and 6 carbon atom present. So industrial name is 666, 6 and 6. And other industrial name is gamexane, linden, so dear students, benzene react with chlorine, yes, in the presence of light and BHC is formed. IUPAC name of BHC is 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane. Other name mean industrial name is 666, gamexane, and linden. Okay, BHC complete and this one last name. Last topic of this chapter is BHC and DDT effect on environment. Effect on environment. BHC और DDT के इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट, इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है,
उस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं। टॉक्सिक एंड हार्मफुल नेचर, टॉक्सिक एंड हार्मफुल नेचर, टॉक्सिक एंड हार्मफुल नेचर। डियर स्टूडेंट्स, बीएचसी और डीडीटी जो है ये टॉक्सिक एंड हार्मफुल नेचर के होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स खेतों में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स मीन सीड्स जो होते हैं, क्रॉप सीड्स प्लांट्स जो भी होते हैं उनको कोई भी कीटाणु उनसे इंसेक्टिसाइड से इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका छिड़काव किया जाता है, इनको फैलाया जाता है, इनको डाला जाता है खेत के अंदर डीडीटी एंड बीएचसी को, ताकि इंसेक्टिसाइड्स की भांति ये कार्य कर सके और छोटे जो सूक्ष्म जीव जंतु उनको ये नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये उसी चेन के द्वारा, फूड चेन के द्वारा ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में फूड चेन के द्वारा ये एंटर कर जाते हैं और ह्यूमन बॉडीज को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनकी नेचर जो होती है वो हार्मफुल होती है, टॉक्सिक नेचर के होते हैं और मैनी डिजीज इनकी वजह से होती है। बहुत सारे डिजीज हैं जैसे ये जो इनकी वजह से होती है, कैंसर और अदर डिजीज का सोर्स बीएचसी एंड डीडीटी होती है। तो टॉक्सिक एंड हार्मफुल नेचर की होती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है। नंबर सेकंड पॉइंट है सोइल पॉल्यूशन। सोइल पॉल्यूशन, ये स्टूडेंट्स डीडीटी और बीएचसी जो है वो सोइल पॉल्यूशन करते हैं। मेन इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इनको यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स भी जो भी प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स जो छोटे कीटाणु हैं उनसे बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स की भांति इनको यूज़ करते हैं और ये सोइल के अंदर जाते हैं और सोइल की जो क्वालिटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, सोइल की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं और जो प्रोडक्शन है खेत का उसको ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। प्रोडक्शन इजीली नहीं हो पाता है किसी भी प्लांट्स का, जैसे गेहूँ बाजरा वगैरह जो भी हम खेती में करते हैं या हमारे जो उसमें प्लांट्स वगैरह जो भी हम इसमें उगाते हैं उन पे हम कीटाणुनाशक का छिड़काव करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का हम छिड़काव करते हैं, तो वो सोइल के अंदर जाता है। सोइल के अंदर जाकर के प्लांट्स को इंक्रीज कर देगा। मेन प्लांट्स के अंदर वो इसमें एंटर कर जाते हैं, फूड चेन को अफेक्ट करते हैं एंड सोइल के अंदर जाकर के सोइल की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं और आगे जाकर के प्रोडक्शन इसमें बहुत ही कम मात्रा में होने लग जाता है, कम क्वांटिटी में होने लग जाता है। मीन सोइल पोल्यूशन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज अफेक्टेड फूड चेन। फूड चेन को ये अफेक्ट करते हैं, मेन ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाते हैं प्लांट्स के जरिए, मिल्क के जरिए, एग्स के जरिए, जो भी हम इसमें सेवन करते हैं, अपन खाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्स के द्वारा, प्लांट्स या फिर मिल्क के द्वारा ये एंटर कर जाते हैं और ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं और मेनी डिजीज का कारण ये बनते हैं। अफेक्टेड फूड चेन एंड नंबर 4 पॉइंट इज अफेक्टेड नर्वस सिस्टम ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स, अफेक्टेड नर्वस सिस्टम ऑफ लिविंग बीइंग्स। जीवित जंतु होते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, जीवित जीव जंतुओं के नर्व सिस्टम को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नर्व सिस्टम को इफेक्ट कर देंगे और नर्व सिस्टम को इफेक्ट करने की वजह से ह्यूमन बॉडीज जो होती है उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है और इम्यूनिटी यदि डिक्रीज हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो मेनी डिजीज होने की संभावना होती है, बहुत सारे डिजीज होने की संभावना होती है, लाइक कैंसर एंड एनी अदर डिजीज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और आज के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। यदि आप आंसर्स को सोल्व कर पाते हो इजीली, बहुत आपके लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप इनको सोल्व नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सके। कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके एनी डाउट्स जो है वो सारे डाउट्स उस वीडियो के अंदर आपके क्लियर कर दिए जाएंगे और वो वीडियो आपको बना करके उन क्वेश्चंस का दिया जाएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें।
आज की क्वेश्चन है आपके लिए Prions are question number 1 not used in refrigerator and air conditioner. Modern time. Why? Fuels are not used in refrigerator and air conditioner in modern time. Why? आपको इसका रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है to prepare salicylic acid by CCl4. To prepare salicylic acid by CCl4. Question number 3 is prepare CCl4 by H2Cl sulfuric chloride. Question number 4 is IUPAC name of these compounds. First A, B, the IUPAC name of these compounds. So dear students, total 4 questions now. First, freons are not used in refrigerator and AC in modern time. Why? To prepare salicylic acid by CCl4, to prepare CCl4 by Cl2 and B. IUPAC name of these compounds. What? Cerebral salicylic acid, salicylaldehyde and other carbonic compound. So dear students, टोटल 4 क्वेश्चंस का आपको सोल्व करना है और आंसर्स का आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लगातार वीडियो देखते रहिए ताकि जो पीछे की वीडियोस में क्वेश्चंस पूछे गए वो नेक्स्ट वीडियोस में सोल्व किए जाते हैं तो आपको आसानी से उनके आंसर्स आप उनको देख सको और सॉल्व कर सको। इसलिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की लगातार मिलती रहे और अब अगले वीडियो में जब क्वेश्चंस आपके सोल्व किए जाते हैं तो आप देखना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।